Okay, Assalamualaikum. Ma'am, Subha, please share your screen. जी आज हमने किस मॉड्यूल को डिस्कस करना है? रीडिंग। जी बिल्कुल, आज हम रीडिंग को ही करेंगे और रीडिंग के हमारे कल ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के फर्स्ट 2 पैसेज हो चुके थे, तो लास्ट 2 रहते हैं, तो आप उसी को ओपन करें। कल जो हमने पैसेज किए थे, अगर उसमें किसी को किसी क्वेश्चन के बारे में कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। हमारा ये सेशन रखने का मकसद ही होता है, वरना तो प्रैक्टिस हम सब कर सकते हैं, बट एक साथ डिस्कशन करने से जो हमारी कंफ्यूजन होती हैं वो क्लियर हो जाती हैं। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो रीडिंग पैसेज 1 एंड 2 के बारे में तो प्लीज आस्क फ्रीली। ओके, आज का हमारा है पैसेज 3। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द क्वेश्चंस स्टेटमेंट्स। मैम अगर कोई पार्टिसिपेंट विलिंग है तो एक दफा इसकी रीडिंग करवा लें। ठीक है, नो प्रॉब्लम। यस प्लीज, एनीवन। Anyone want to read this passage? Be confident. रीडिंग पैसेज को रीड करने से होगा क्या, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि वो इस रीडिंग में किस किस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसलिए अगर आप लोग पहले रीड कर लेते हैं तो आपको समझने में आसानी रहेगी। No one is there. Okay, ma'am, I can. Please start it. Composer Ludwig van Beethoven was born on or near December 16, 1770 in Bonn, Germany. He is widely considered the greatest composer of all time. Sometime between the births of his two younger brothers, Beethoven's father began teaching him music with an extraordinary rigor and brutally that affected him for the rest of his life. On a near daily basis, Beethoven was flogged, locked in the cellar, and deprived of sleep for extra hours of practice. He studies the violin and clavier with his father, as well as taking additional lessons from or, uh, organists around town. Beethoven was a prodigiously talented musician from his earliest days and displayed flashes of the creative imagination that would eventually reach further than any composers before or since. In 1804, only weeks after Napoleon proclaimed himself emperor, Beethoven debuted his Symphony Number 3 in Napoleon's honor. It was his grandest and most original work to date. So, unlike anything heard before that, through weeks of rehearsal, the musicians could not figure out how to play it. At the same time as he was composing these great and immortal works, Beethoven was struggling to come to terms with a shocking and terrible fact, one that he tried desperately to conceal. He was going deaf
At the turn of the century, Beethoven struggled to make out the words spoken to him in conversation. Despite his extraordinary output of beautiful music, Beethoven was frequently miserable throughout his adult life. Beethoven died on March 26, 1827, at the age of 56. Okay, fine. Thank you. Now look at the statements. Our first statement is about it is not known exactly when Beethoven was born. So this statement saying that कि इससे पहले कुछ भी मतलब नहीं जानते थे कि जब तक बेथोवन नहीं बोर्न हुआ था तब तक कोई नहीं जानता था एग्जैक्टली मतलब वो एक मशहूर आदमी था उससे पहले वो शोहरत जो उससे फेमस जो पॉपुलैरिटी उससे मिली है उससे पहले वो किसी को नहीं मिली थी ये बात क्लियर होती है नहीं हम पैसेज में देखते हैं लुक एट द पैसेज कंपोजर Ludwig van Beethoven was born on or near December 16, 1770 in Bonn, Germany. He is widely considered the greatest composer of all time. Sometimes between the births of his two younger brothers, Beethoven's father began teaching him music with an extraordinary rigor and brutality that affected him for the rest of his life. So according to this passage, in the first two lines, I think first statement is about true. According to first two lines, till all time. He is widely considered the greatest composer of all time. ठीक है? तो I think first one is true. जी, clear हुआ ये? इसका आंसर लिख ले अपनी साइड पर फर्स्ट वन इज ट्रू अब हम सेकंड स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं Beethoven suffered cruelty at the hands. Excuse me, ma'am. जी जी First question क्या है? It is not known exactly when Beethoven was born. ये है question. Isn't it? हाँ जी तो इसका आंसर किस बेस पे आप दे रहे हैं? इस बेस पे दिया है अच्छा वो ये हुआ था कि बेथोवन जब बोर्न हुआ था तब उस टाइम उसे कोई भी नहीं जानता था नहीं, देखिए नो क्वेश्चन मैम ये नहीं है. इसकी Question ये डेट नहीं ऑफ है. बर्थ का है इसमें Exactly. डेट They ऑफ are बर्थ asking का है about his date of birth. It is known exactly when Beethoven was born. So don't know exactly when Beethoven was born because वो first line में ओके clear नहीं है. There is फाइन an or over there that was born or near. Like the writer is not sure that born फाइन on 60 or near 60. That's why this statement is true. Yes, I got it. Thank you. Okay, on the next statement, Beethoven suffered cruelty at the hands of his father. So after this, after the second line, sometime between the births of his two younger brothers, Beethoven's father began teaching him music with an extraordinary rigor and brutality that affected him for the rest of his life. So the meaning of brutality same as the cruelty. I think so. कि वो ये कहना चाहते हैं कि उसके स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा कि वो अपने फादर के हाथों बहुत मतलब जुल्म या सख्तियां बर्दाश्त करता था तो इसमें इस पैसेज में उन्होंने कहा है कि उसके जो फादर थे उसके टू यंगर ब्रदर के बाद उसके फादर ने टीचिंग स्टार्ट उससे पढ़ाना सिखाना स्टार्ट किया म्यूजिक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिकॉर्ड के साथ और ब्रूटैलिटी के साथ के मतलब उसका ज्यादा कॉन्शियस था और उसके साथ वो सख्ती से पेश भी आता था इस बात पर और इसके जो उनके फादर की सख्ती थी इस वजह से वो उसकी पूरी लाइफ क्या होगी अफेक्टेड मतलब थोड़ी चेंज हो गई so I think second one also true about this statement now come toward the third
Beethoven was denied hours of sleep as a punishment for poor performance. तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो बिथोवन को पनिशमेंट मिलती थी वो उसकी पुअर परफॉर्मेंस की वजह से मिलती थी. On a near daily basis, Beethoven was flogged, locked in a cellar, and deprived of sleep for extra hours of practice. So I think it is false. उन्होंने कहा कि पैसेज के अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं कि उससे स्लीप उसे प्रॉपरली नहीं मिलती थी क्योंकि वो एक प्रैक्टिस एक्स्ट्रा आवर्स की करता था, तो इसलिए उसकी स्लीप कम होती थी. ठीक है मैम, दूसरे की नहीं समझ आई. मतलब स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि उसने सफर किया, लेकिन जी. ऊपर वो कह रहा है कि मतलब जो मुझे जो समझ आ रही है कि उसे इसका फायदा हुआ जो फादर उसका सख्ती करता था उसमें. नहीं, वो ये कह रहा है बेशक स्टेटमेंट उन्होंने कहा कि वो सफर करता था, ठीक है, और वो सफर जो कर रहा है वो ऊपर उन्होंने पैसेज में ये भी बताया कि उसके फादर सख्ती करते थे, मतलब फादर की सख्ती की वजह से वो इस काबिल हुआ कि उसकी लाइफ चेंज हो गई. मतलब सेंस तो बनती है उससे बिल्कुल अकॉर्डिंगली जो उन्होंने ऊपर बात करें पैसेज में और वो स्टेटमेंट में कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, मतलब सख्ती तो उसके फादर से ही मिली है ना. ओके मैम. ठीक है, तो थर्ड वन जो है वो फॉल्स है क्योंकि वो अपनी स्लीप को डिनाई करता था या डिप्राइव करता था किसके लिए, एक्स्ट्रा आवर्स प्रैक्टिस के लिए, ना कि पुअर परफॉर्मेंस की पनिशमेंट में. सो दैट्स व्हाई थर्ड वन इज फॉल्स. सो कम टुवर्ड द फोर्थ. Beethoven's father was also a talented musician. है कि उसके जो फादर थे वो भी एक टैलेंटेड म्यूजिशियन थे. ओके. He studied the violin and clavier with his father as well as taking additional lessons from organists around town. Beethoven was a prodi- prodi- prodigious- prodigiously talented musician from his earliest days and displayed flashes of the creative imagination that would eventually reach farther than any composers before or since. According to this, I think it is true. What do you think? कहते हैं उसकी जो अपनी जो एक बहुत अच्छी टैलेंटेड म्यूजिशियन जिसके अंदर ये एबिलिटी थी वो इस वजह से आई कि उसमें एक उसके फादर जो थे वो भी इतने टैलेंटेड जी थे. मैम, ये ट्रू है. ये ट्रू है. ट्रू है. ओके, फिफ्थ वन. Beethoven's Sorry, hold on please. आप लोग कौन सा स्टैंड क्या डिस्कस कर रहे हैं? Is it the number 4 that we are discussing? Yes. Number 4. What is it saying? It's saying that Beethoven's father was also a talented musician. Any one of you seen this sentence over here that his father was a musician? No, ma'am, but he learned from him, so he must be talented musician. So what does it mean? No. Where have you seen this thing? I exactly want this sentence from all of you that his father was a musician. Fine. Do you see this sentence over here? But how could he learn from someone who doesn't even know himself? Really? Beethoven's father began teaching him music with an extraordinary rigor and brutality that affected him for the rest of his life. So, does it mean that he was a musician? If he wasn't a musician, then how could he teach him? No, it is not written over here that he was a musician. Anyone Yes, ma'am. can learn something. I agree. Anyone can make him teach something. The person who is teaching you right now is not an IELTS teacher, right? But he is making you learn all these things because he is forcing you. He has made you sit over here and listen to whatever is going over here. He is making you read all these things. So does it mean that she is an IELTS teacher? No, she is not. बात
को जहन में रखें, आयल्स के अंदर आपने अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करना है। आपको जो चीज लिखी नजर आ रही है ना वही एग्जिस्ट करती है, जो चीज लिखी हुई नहीं है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आप लोग अपने तौर पे सोच रहे होंगे हाँ ये ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, इवन यूनिवर्सल फैक्ट भी हो सकता है, लेकिन अगर पैराग्राफ नहीं है ना तो आप उसे नहीं ले सकते हैं कि हाँ ये एग्जिस्ट करता है। रीडिंग बहुत अच्छी प्रैक्टिस ये होती है, रीडिंग से पहले बहुत अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि आप इसके क्वेश्चंस को पहले पढ़ें और आंसर बाद में ढूंढें। पहले पढ़ लें, पैराग्राफ बाद में पढ़ें। क्वेश्चन पढ़ने के बाद प्लीज उसमें से ये आपके जहन में क्लियर हो कि हमें ढूंढना क्या है, कम से कम माइंड में ये चीज हो कि आखिर आप किस लिए यहाँ, मतलब क्या वो आपसे पूछना क्या चाह रहा है, वो जब आप होगा ना और उसको जहन में रखते हुए आप पढ़ेंगे तो फिर आपका से जल्दी पढ़ा जाएगा। और जो ये जो रीडिंग है ना ये सबसे टफ होती है, लोग राइटिंग को टफ समझते हैं लोग, लेकिन रीडिंग सबसे टफ होती है। उस 1 घंटे के अंदर इसको पूरा पढ़ना और इसके आंसर ढूंढना एक मुश्किल काम होता है, और खासतौर हम लोगों के लिए जिनकी प्रैक्टिस भी नहीं होती। तो चीजों को ट्राई टू, मतलब जैसे जैसे आप अपने न्यूरॉन्स को ट्रेन करेंगे ना, जाके आपको कोई टिप्स ट्रिक्स कुछ भी याद नहीं रहेगा। उस टाइम सिर्फ जो चीज आपके काम आएगी वो यही आएगी कि आपने प्रैक्टिस कितनी की हुई है और किस तरह की हुई है। तो आप अपनी हैबिट शुरू से ही ऐसी बनाएं जिसका आपको फायदा इन द लॉन्ग रन। आराम आराम से पढ़ पढ़ के ये इसका फायदा नहीं होगा। कुछ चीजों को क्विकली स्किम, ये नहीं मैं कह रही कि आप रीडिंग में स्किम हर दफा नहीं चलता, कुछ डिजिट्स कई होते हैं जिनके लिए आप कह लेंगे आप फौरन से वहां पहुंच जाते हैं, आपकी बेस पे आप गेस कर लेते हैं। लेकिन फिर वही बात है, अब आप 5th क्वेश्चन जब पैराग्राफ पढ़ने से पहले अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा होता ना तो आपको पता होता कि मुझे एग्जैक्टली ढूंढना क्या है, वो मुझसे चाह क्या रहा है उस वक्त अगर आपको। और फिर वही बात, ये बात भी ध्यान में रखें कि जो चीज एग्जिस्ट कर रही है सिर्फ वही जो आपको क्लियर कट नजर आ रही है ना कि हाँ ये है। अब बेसिकली हम नहीं कह सकते कि वो म्यूजिशियन था या नहीं था, हो सकता है वो उसे सिखा रहा है तो वो म्यूजिशियन होता, लेकिन लिखा नहीं हुआ तो हम श्योर नहीं है कि वो म्यूजिशियन था या नहीं था। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि वो म्यूजिशियन नहीं था, और हम ये भी नहीं कह सकते कि वो म्यूजिशियन था। तो हम यही कहेंगे कि हमें इस बारे में श्योरिटी नहीं है, इट्स नॉट क्लियर ओवर हियर, इट्स नॉट रिटन ओवर हियर, तो हम इसे नॉट गिवन करेंगे। Got it, ma'am. Thank you. ओके मैम की बात क्लियर होगी आप सबको? अब नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके नाउ फिफ्थ वन, Beethoven's Symphony Number 3 was inspired by a famous man. So look at the second paragraph of this passage. In 1804, only weeks after Napoleon proclaimed himself emperor, Beethoven debuted his Symphony Number 3 in Napoleon's honor. So according to this line, I think this is not true because they are not talking about inspiration. And the meaning of debuted, I'll check it from dictionary. Okay, debuted meaning is a first appearance, a formal entrance into society. So I think so. This is also not given. ओके उन्होंने इस स्टेटमेंट जैसे में ये कहा कि जब नेपोलियन ने खुद को अपना एज अ क्लेम किया खुद का एज अ एम्परर, तो बेथोवन ने उसके ऑनर में तो उसने ये अपनी यानी कि फर्स्ट टाइम उसने सिंगिंग की।
ठीक है, तो इंस्पिरेशन की इसमें कोई बात नहीं हो रही थी, तो इसलिए हम इसे कहेंगे दिस वन आल्सो नॉट गिवन, क्योंकि स्टेटमेंट में क्या बीथोवन सिम्फनी नंबर 3 वाज इंस्पायर्ड बाय अ फेमस मैन। इंस्पायर्ड तो नहीं हुई, कुछ भी है, कोई भी मैन ऐसा नहीं था जिससे इंस्पायर हुआ हो, बट उसने क्या किया, जैसे उसके ऑनर में उसने वो सिंगिंग की थी। ठीक है, तो फिफ्थ वन आल्सो नॉट गिवन। एंड सिक्स स्टेटमेंट इन द अर्ली 1800s Beethoven struggled to follow a conversation. So this one is look at the last line of the second passage. He was going deaf at the turn of century. Beethoven struggled to make out the words spoken to him in conversation. At the turn of the century, Beethoven struggled to make out the words spoken to him in conversation. So sixth one is true. क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हमें पैसेज में बताया है, तो स्ट्रगल कर रहा है कि वो कैसे वर्ड्स बनाए, बोल सके अपनी कन्वर्सेशन के टाइम। सो सिक्स वन इज ट्रू। ओके, हम इसे अब चेक कर लेते हैं। मैम तो आप इसे आंसर्स ओपन करें। ओके, अब अपनी साइड पे आप लोग चेक कर लें। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, second one also true, and third one is false. Fourth one is corrected by Ma'am Mavish. This one is not given. And fifth one also not given. And the reason of this, the main problem people have with this question is the word inspire. The word inspire and the words in someone's honor are not at all the same. They have a completely different meaning. Check an online dictionary to find out. ओके, वही बात होगी जो मैंने कही थी कि वहाँ इंस्पायर का वर्ड यूज नहीं किया, उन्होंने सिर्फ उसके ऑनर की बात की थी कि उसके ऑनर में उसने किया सिंगिंग। ओके, नेक्स्ट वाला जो सिक्स वन है, दैट इज आल्सो ट्रू। फाइन। एनी कंफ्यूजन इन दिस रीडिंग पैसेज? If it is not, then we will come toward the next passage, passage number 4. Okay, first of all, we read the statements of this passage. In China, spam text messaging is a successful business. People's phone numbers are collected through the use of technology which cannot be readily bought. In no other country do people receive more spam texts than in China. In 2013, the number of spam texts increased considerably to reach 300 billion. The majority of all texts received in Shanghai and Beijing are spam. In 2011, Americans sent more texts than anywhere else in the world. Now come toward the look at the first statement. In China, spam text messaging is a successful business. Spam as, look at the first passage. Spam as every user of mobile phones in China is aware to their intense annoyance is a roaring trade in China. Intense. Roaring trade, I think it's a successful business. And intense is a strong or extreme. So according to this line, I think first statement is true. What do you think?
Is it clear to all? अनॉयंस की मीनिंग क्या है? Okay, I'm checking from the dictionary. The meaning of this, the act of annoying someone or of being annoyed. The state or feeling of being annoyed. Irritation. Basically, over here, the writer was trying to confuse you with the word annoyance. कि पहली नजर में annoyance से ये बात लगे कि ये कोई बुरी चीज है जिससे आपको गुस्सा आ रहा है या ये कोई नेगेटिव इम्पैक्ट देने की बात कर रहा है, लेकिन जैसे मैं बता रही थी कि अगला वर्ड ये जो रोरिंग ट्रेड है ना, ये इसमें की वर्ड है, यहाँ उसने घुमाना जरूर चाहा है, लेकिन असल बात ये है कि जो एसपीएम जो स्पैम है या एसपीएम व्हाटएवर इट इज अ रोरिंग ट्रेड इन चाइना, और इतना ही उसको रिक्वायर है। बाकी दरमियान में क्या चीज है वो ये कहना चाह रहा है कि इट्स एज एवरी यूजर ऑफ मोबाइल फोन इन चाइना इज अवेयर ऑफ देयर इंटेंस अनॉयंस, के मतलब इनकी वजह से शायद वो जिसे कहते हैं ना एक्ट ऑफ अनॉइंग है कि इससे अनॉयंस होती जरूर है, लेकिन फिर भी ये एक रोरिंग ट्रेड है चाइना में। Okay, now come towards the next statement. People's phone numbers are collected through the use of technology through cannot be readily bought. Okay, स्टेटमेंट में वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो पीपल्स के फोन नंबर्स हैं वो कलेक्ट होते हैं एक टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए जो कि उन्होंने बॉट नहीं की हुई थी, खरीदी नहीं हुई थी, खरीदी नहीं जा सकती थी। तो इसे हम देखते हैं, इफ डिलीवरी मैन ड्राइव थ्रू रेजिडेंशियल नेबरहुड इन टेक्स्ट मैसेजिंग कार with illegal but easy to buy gadgetry, they use to hijack links between mobile phone users and nearby communications mesh. So easy to buy gadgetry. According to this, I think it's opposite to this from the statement. So that's why it is false. उन्होंने कहा कि उस गैजेट को, उस टेक्नोलॉजी को खरीदना मुश्किल था, बट पैसेज में वो कह रहे हैं इजी टू बाय, के उसे खरीदना आसान था जिससे वो ये कर सकते थे काम, कि वो पीपल्स के फोन नंबर चेक कर सकते थे, फोन नंबर्स कलेक्ट कर सकते थे। ठीक है। Now third statement is, in no other country do people receive more spam text than in China. ओके, वो कह रहे हैं किसी और कंट्री में इतने स्पैम मैसेजेस रिसीव नहीं होते जितना कि चाइना में होते हैं। They then target the numbers they harvest, blasting them with spam text messages before driving away. Mobile phone users usually see only the worrisome results, another sprinkling of spam messages offering deals on flat investment advice and dotty receipts for tax purposes. Chinese mobile users get more spam text messages than their counterparts anywhere else in the world. So, second paragraph, first line, showing this third statement is true. Is it clear? Yes. Okay, fourth statement is about, in 2013, the number of spam texts increased considerably to reach 300 billion. 2013 में उन्होंने कहा जो नंबर ऑफ स्पैम टेक्स्ट थे वो इंक्रीज हो रही थी और कहाँ तक पहुंच गई थी, 300 बिलियन।
ओके, इसी से नेक्स्ट लाइन पे देखिए, they received more than 300 billion of them in 2013, or close to one a day for each person using a mobile phone. True. They received more than 300 billion of them in 2013. Statement देखते हैं. In 2013, the number of spam texts increased considerably to reach 300 billion. Opposite है. क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो इंक्रीज हुई थी और तब वो 300 बिलियन तक पहुंची थी। और जो कि हम जो हम पैसेज में पढ़ते हैं, तो पैसेज में वो ये कह रहे हैं जस्ट हमें कि 2013 में जो मैसेजेस रिसीव हुए थे वो मोर देन 300 बिलियन थे। या तो ये फॉल्स है या नॉट गिवन है। नॉट गिवन के चांसेस इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि ये स्टार्ट कहाँ से हुए और एंड हो चुके हैं 300 बिलियन तक या नहीं। बस इतना कर दे, सिर्फ मोर देन 300 बिलियन। I think so this one is not given. Okay, come toward the next statement. The majority of all texts received in Shanghai and Beijing are spam. Users in bigger markets like Beijing and Shanghai receive 2 a day or more than 700 annually, accounting for perhaps 1/5 to 1/3 of all texts. ये यहाँ फॉल्स हो मैंने जाएगा। टू नंबर्स की बात की, तो 1/5 to 1/3 ऑफ ऑल टेक्स्ट, मतलब 1/5 तो हम बात कर सकते हैं कि स्पैम की बात कर रहे हैं, बट 1/3 जो है वो ऑल टेक्स्ट की बात हो रही है। जितने भी टेक्स्ट रिसीव होते हैं उसके 1/3 पार्ट में से 1/5 पार्ट जो था वो स्पैम का था, तो इसलिए ये जो है ना मुझे फॉल्स लगता है। मुझे भी फॉल्स। ओके, फिफ्थ वन इज फॉल्स। नाउ कम टुवर्ड्स सिक्स। In 2011, Americans sent more text than anywhere else in the world. इसी से आगे ना दिया हुआ Americans by comparison received an estimated 4.5 billion junk messages in 2011, or fewer than 20 per mobile user for the year, out of a total or more than 2 trillion text messages sent. Out of the total of more than 2 trillion text messages. ऊपर जो हमें बात हुई है ना, ये बाय कंपैरिजन रिसीव्ड एन एस्टिमेट, ये रिसीव्ड की बात हो गई। फिर नीचे आते हैं सेंड की, फ्यूर देन 20 पर मोबाइल यूजर फॉर द ईयर, आउट ऑफ अ टोटल ऑफ मोर देन 2 ट्रिलियन टेक्स्ट मैसेजेस सेंट। तो ये वाली बात होती है कि ज्यादातर उसने जो मैसेजेस सेंड हुए थे वो अमेरिकन के ही हुए थे। तो इस लास्ट लाइन की वजह से ये मुझे ट्रू लग रहा है। नहीं मैम, इन्होंने कोई ऐसी बात यहाँ नहीं बताई हुई। मैंने बल्कि ऊपर जाके इसको चाइना का भी पढ़ना शुरू कर दिया था कि चले अगर कोई लिंक बनता हो इस तरह का जिसमें ये कहा हो कि चाइना इतने मैसेज भेजे थे 2011 में, तो अब
अमेरिका ने इतने भेजे हैं, उससे हम कोई लिंक निकाल लें, लेकिन ऊपर चाइना के भेजने की भी, और 2011 स्पेसिफिकली 2011 की कोई बात नहीं हुई, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। जो ठीक है, स्टेटमेंट दी हुई है हम इसको नॉट मतलब Not even. इनकम्प्लीट उन्होंने बताया हुआ है, तो इस तरह से ये नॉट गिवन हो जाएगा। हाँ मुझे भी यही लग रहा है। उन्होंने सेंट का तो बता दिया, बट ये नहीं बताया, कंपैरिजन नहीं किया हुआ कि ज्यादा इन्हीं के थे या किसी और के थे, तो Exactly. नॉट गिवन। ओके, चेक इट। Our first statement is true, second one false। ओके, सेकंड वन फॉल्स है, तो उन्होंने बता दिया यहाँ पे कि जो द गैजेट्रिक वो है, वो एक टेक्नोलॉजी का वर्ड है जिसका सिनोनिम यूज किया इजी टू बाय, रेडीली बॉट। ये दो इनके सिनोनिम्स हैं। दिस इज फॉल्स बिकॉज द पैसेज शोज इट इज इजी टू बाय, व्हिच इज कॉन्ट्राडिक्ट्स द स्टेटमेंट। ठीक है, थर्ड वन इज ट्रू एंड fourth one is not given. Most people get this question wrong because they don't pay attention to meaning. The passage only gives one fixed number in time over 300 billion. Over 300 billion means more than 300 billion. It does not indicate an increase or a decrease. क्लियर हुई ये बात कि नॉट गिवन इस वजह से था कि उन्होंने 3 बिलियन का मतलब उसकी क्वांटिटी तो बता दी, बट ना उसके इंक्रीज होने का कहा है, ना ही उसके डिक्रीज होने का। उन्होंने जस्ट इतना कहा कि वो मोर देन 3 बिलियन रिसीव हुए थे। अब ये नहीं कह सकते कि इनके जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज थी या डिक्रीज, तो इस वजह से ये नॉट गिवन है। और फिफ्थ वन इज फॉल्स, ओनली वन थर्ड आर स्पैम एट द मोस्ट। ओके, और सिक्स वन इज नॉट गिवन। और इससे नीचे आपको वोकैबुलरी गिवन है, जो हमने यहाँ पे पैसेज रीड किया है, ये वाला लास्ट वन। यहाँ पे कुछ उन्होंने डिफिकल्ट वर्ड्स गिवन थे, तो उन्होंने उसकी वोकैबुलरी भी साथ में दी है। इंटेंस, रोरिंग, बिजनेस, रेसिडेंशियल, आप इन्हें याद कर सकते हैं ताकि इजी रहेगा। अगर नेक्स्ट टाइम ये वर्ड्स यूज होते हैं तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। यहाँ तक हमारा ट्रू फॉल्स नॉट गिवन वाला कंप्लीट होता है। अगर किसी को इसमें कंफ्यूजन है तो बता दें। No, ma'am, no confusion. ये जो आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इस वाले टेस्ट में से आइल्स लेट्स की लेट्स की, क्या एक्चुअल टेस्ट भी ऐसे ही होता है? ये आई थिंक स्मॉल पैराग्राफ्स हैं ये तो काफी। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ये स्मॉल पैराग्राफ है, ये जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया हुआ है इन्होंने। एक्चुअल टेस्ट जो होता है वो जरा लेंथी भी होता है, और उसमें मतलब पूरा प्रॉपरली आपको टाइमिंग भी उसमें शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, और क्वेश्चनिंग की भी जो वैरायटी होती है वो डिफरेंट होती है। तो यहाँ हम जो कर रहे हैं IELTS से, इन्होंने जस्ट ट्रू फॉल्स को अलग से एक पार्ट बना लिया, बाकी सबको अलग से पार्ट दिया हुआ है। ये जस्ट हमारे लर्निंग के लिए है कि हम उनके मतलब बेसिक चीजें सीख रहे हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। आपकी बात सही। क्लियर हो गई? जी जी, गॉट इट। मैम ओके, हम अपनी ग्रामर को कैसे इम्प्रूव करेंगे? ग्रामर में बहुत मिस्टेक होती है मुझसे। वो ऐसे ही होता है ना कि हम जब उसे यूज करते हैं ना, अब यहाँ पे जो भी हम 4 मॉड्यूल्स हैं, हम वहाँ टोटली यूज इंग्लिश कर रहे हैं, तो हम जब खुद ब खुद प्रैक्टिस करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारी यहाँ ग्रामेटिकल मिस्टेक है। स्पेशली आप राइटिंग के लिए कह रहे हैं, यस मैम। तो राइटिंग के लिए तो वो होते हैं, मतलब एक फ्री गिवन है, वहाँ जाके आप अपनी करेक्शन करवा सकते हैं, ग्रामर मिस्टेक्स को भी ठीक कर सकते हैं। अपना मैम जो भी आपने ऐसे लिखा होगा उसे वहां जाके कॉपी कर दें और फिर वहां से चेकिंग करवा लें। हाँ लेकिन मैम सीखने को समझ में नहीं आता। लाइक वो बता तो देता है कि ये गलती है, लेकिन लर्निंग नहीं हो पाती। यानी लर्निंग ग्रामरली भी स्टॉल हुआ हुआ है।
तो वो करेक्शन करवा देता है, लेकिन पता नहीं चल रहा होता कि यहाँ ये वर्ड लग रहा है तो क्यों लग रहा है। मतलब आपके जो बेसिक है ना इंग्लिश की, वो थोड़ी उसमें आपको मिसअंडरस्टैंडिंग होगी जिसकी वजह से आप ऐसे करते हैं, तो यस उन्हें मैम। इम्प्रूव करना होगा आपको ना। जैसे कि हम अगर देखते हैं कि लेवल 5 के बच्चों को अगर हम देख रहे हैं कि हम अगर हम उन्हें इंग्लिश लर्न करवाते हैं तो किस तरह से उनके इंग्लिश पी के कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, हर एक चीज को आप फिर डीपली देखें, हम दोबारा से अपने कॉन्सेप्ट बनाएं, इस तरह से इम्प्रूव हो जाएगा। सारे टेंसेस को दोबारा से देखें। सही मैम, इंशाल्लाह। ठीक है, मैम नाउन प्रोनाउन इनमें देखें कि इनमें कैसे यूज करना है। जी मैम थोड़ा बुक्स का बता दें, बुक्स कौन से पढ़े और डाउनलोड कहाँ से होंगे वो? ये हमने ना इसी इसी अपने जो 9 के वाला सेशन है यहाँ पे पिन फाइल दूंगी, उसमें एक ड्राइव लिंक आपको गिवन होगा। ड्राइव लिंक में है कैम्ब्रिज की बुक्स। ठीक है, वो जो कैम्ब्रिज की बुक्स है उसमें आपको एक ऑफिशियल मटेरियल गिवन है, जो हमारा ऑफिशियल टेस्ट आता है वो उससे ही मतलब अकॉर्डिंग टू दिस उसके होता है। बिल्कुल एज इट इज नहीं होता, बट मैं ये कहूंगी कि आपको एक आइडिया हो जाता है कि आपका टेस्ट आना कैसे है। ठीक है, तो वो कैम्ब्रिज बुक्स का आपको ड्राइव लिंक है, वो आपको बुक्स मिल जाएंगे। अगर आप वो डाउनलोड कर लेते हैं अपने लैपटॉप में तो आप इजीली उन टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं। और हर बुक के एंड में उसके आंसर्स जो टेस्ट उन्होंने गिवन होते हैं 4, यानी कि एक अगर कैम्ब्रिज बुक 1 है तो उसमें 4 ही रीडिंग होंगे टेस्ट, 4 राइटिंग और 4 लिसनिंग एंड 4 स्पीकिंग। तो एट द एंड उन्होंने फिर उन सबके आंसर्स भी दिए होते, फिर आप वहां से चेक कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, और उसके बाद जो अगर हमने ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी होती है अपने कॉन्सेप्ट के लिए, वो IELTS एक बेस्ट आपके पास वेबसाइट है। आप इसके टिप्स को देखें, इंफॉर्मेशन लें, और जो इन्होंने प्रैक्टिस करने के लिए हमें चीजें दी हैं उन पे आप प्रैक्टिस करें, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और इसके अलावा फिर एक और ऑनलाइन मॉक टेस्ट गिवन होते हैं। ठीक है, IO, हाँ, ऑनलाइन ऑनलाइन मॉक टेस्ट आप लिखेंगे ना, ऑनलाइन आइल्स मॉक टेस्ट, तो वो सारे टेस्ट आपके ओपन हो जाएंगे। ईच मंथ में 2 उनके टेस्ट होते हैं, टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2। तो वो चारों जो मॉड्यूल्स हैं आप उनके प्रैक्टिस करें वहां पर भी। मतलब इस तरह का मटेरियल गिवन है। अगर आपको स्टार्ट स्टार्ट लेना है तो मैं कहूँगी आइल्स लिस्ट से स्टार्ट लें आप। ठीक है, अपने पहले जनरल एक बेस बनाएं, यहाँ से पढ़ के कि क्या चीजें और किस तरह से करनी है। उसके बाद फिर साथ साथ आप कैम्ब्रिज की बुक को भी सोल्व करें, उनके जो टेस्ट गिवन है, और मॉक टेस्ट को भी कर लें। ठीक है, ओके मैम। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। हमने जो रीडिंग की जो क्वेश्चन के ट्रू फॉल्स नॉट गिवन कर चुके हैं, अब इससे आगे जाना था। मैम साहब प्लीज इसे बैक पे लेकर आए, जो हमारा बेसिक पेज था इसका रीडिंग का। वहाँ पे सेकंड जो हमें दिया हुआ है वो है डेजर्टिफिकेशन, मैचिंग हेडिंग। मैचिंग हेडिंग थोड़ा टफ होता है, क्योंकि मोस्टली ऐसा भी होता है कि जो हेडिंग्स होती है ना वो शफल करके दी हुई होती हैं, तो हमें नहीं पता होता है कि जो हमें एग्जैक्ट अब मिली है तो नेक्स्ट के जो हेडिंग होगी वो इससे आगे मिलेगी या नहीं। तो वो शफलिंग होती है उनमें, तो थोड़ा आइडेंटिफाई करना टफ हो जाता है। मुझे 1 मिनट दे, मैं आपको शो करवाती हूँ।
ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सबको? ये हमारे पास टॉपिक है, इसमें हमने मैचिंग हेडिंग्स करनी है. Environmental topic. These are the question and these are the names of headings. Fine. Overgrazing, mass migration, overpopulation, polluted drinking water, famine, extinction of species, deforestation, poverty, unsustainable agriculture technique, soil infertility. और यहाँ पास पैसेज गिवन है 1 2 3 करके, इनके पैराग्राफ्स होंगे और हमने इन पैराग्राफ्स को नेम देना है, मतलब उनकी हेडिंग असाइन करने के, इसके इस पूरे पैराग्राफ में किस चीज के बारे में बात हुई है. ठीक है. ओके, तो अब ना हम इसका पहले पैसेज जो नंबर 1 है वो देख लेते हैं. Trees are being cut down at much larger scale than ever before to be used as fuel to provide products we use in our daily life or to simply create more space for agriculture to sustain growing human population. Once the trees and other vegetation in an area are gone, there is nothing left to hold the soil in place. Deforestation. ओके, आप सबको ये लगता है कि ये डिफोरेस्टेशन है? मैम क्योंकि इसमें बोल रहे हैं ट्रीज को कट किया जा रहा है एट लार्ज स्केल, फिर उसके रीजन बताएं मैम. That's why I think it's the more appropriate answer. ओके, इससे फिर आप लोग ना लिख लें अपने साइड पे. ओके ना, यहाँ जगह नहीं दी हुई. जब आपका रियल टेस्ट होता है वहां पे आपको नीचे ब्लैंक्स गिवन होती हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर 1 इज जी. ठीक है, ये जी से मैच कर रहा है. हमने ना हेडिंग के अल्फाबेट्स को यूज करना है, जो नंबरिंग में अल्फाबेट्स दिए होंगे. सेकेंड पैराग्राफ जो पैसेज गिवन है वो है, सॉरी पैराग्राफ, our planet's ecosystem sustain life only when balanced. They can cope with incremental challenges and adapt, but beyond a certain tipping point, they collapse. A rapid increase in the number of people demands higher amounts of natural resources and expands more and more over the landscape, leading to increased desertification. मैम इसकी काइंडली लिंक शेयर कर दें. Okay. इसमें पॉपुलेशन का भी उन्होंने इंक्रीज की बात की है. मैम आया नहीं होगा. आई में क्या है? अनसस्टेनेबिलिटी एग्रीकल्चर टेक्निक्स.
मैम मुझे ओवर पॉपुलेशन लग रहा है, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि इनकी ये नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज हो जाए, जिसकी वजह से जो रिसोर्सेज है वो कम होते जा रहे हैं। ओवर पॉपुलेशन भी हो सकता है। चलिए हम इसे लगा लेते हैं। सेकंड वन सी। Next, third paragraph. Improper irrigation method used in arid areas such as canal irrigation lead to a buildup of salt in the soil and make it difficult for crops and other plants to grow, increasing desertification. Similarly, harmful in cultivation of already um, deteriorated lands through inconsiderate farming methods. Farmers only speed up the process of desertification in exchange for poor quality crops with low economic value. ये improper irrigation method जो है ये उससे मैच हो सकता है, I think so, with unsustainable agriculture technique. I have the same जी opinion. मुझे भी ये आई लगता है। थर्ड वन इज अब फोर्थ हम देख लेते हैं। इन arid regions, grass and other vegetation is necessary to keep the soil in place. If such vegetation is used as feed for cattle without sustainable control, there is nothing that remains to prevent soil from blowing or washing away. And if this process occurs long enough, it can lead to desertification. Grass and other vegetation is necessary to keep the soil in place. तो ये हो सकता है overgrazing, मुझे लग रहा है ये overgrazing है। फर्स्ट वन Yes, ma'am. ओवरग्रेजिंग कैसे होगा? वो तो बोल रहे हैं कि ये ग्रास होने चाहिए, लेकिन हम उनको ज्यादा काटेंगे तो वो सही नहीं होगा सोइल के लिए। अब हमारा ना टाइम एंड होने वाला है, तो आज हमने यहीं तक एंड कर लेते हैं इसे, फिर कल से हम नेक्स्ट को देख लेंगे, ठीक है? आप लोग अपने एंड पे दोबारा ट्राई कीजिएगा, जो हम कंप्लीट कर चुके हैं ट्रू फॉल्स वालों को भी और इस वाले पैसेज को भी। अभी थैंक यू आंसर एवरीवन। तो चेक कर ले, आंसर चेक करनी है, ठीक है कर लेते हैं। Yes, ma'am. Answer check कर ले। फर्स्ट वन जी जो कि ट्रू है, सेकंड वन सी वो भी ट्रू है, थर्ड वन आई वो भी ट्रू है, फोर्थ वन ए। ओके बस यहीं तक देखते हैं, जितने हमने इसके लगाए वो सब ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके अपने एंड पे लास्ट में आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। फाइन, ओके मैम। ओके मैम। ओके अल्लाह हाफिज एवरीवन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।